Welcome everyone, welcome to Code and Square AI channel. In this video, we will talk about what are decorator function in Python. Okay, decorator functions in Python. So first we'll talk about what are decorator and what is our decorator function. What is our decorator function? Decorator or decorator function. Okay, so a decorator function is a function that add extra that add that add extra functionality. Okay, that add extra functionality to another function without changing its original code. So what's the meaning of, like, for example? Okay, so like for example I have this. Okay, so like for example I have this function, its name is add. Okay, here I will add two numbers, one plus. Okay, I want to add this two. Now I have this function. I have this function. Now I want to add extra functionality. I want to add what? I want to add extra functionality. Then using decorator, I can add extra functionality. Okay, without changing its original code. Okay, I will not change its original code. I will not change its original function. Okay, function. But I will add more extra functionality to this function. Okay, that for that we use this decorators. Okay, so let's pray. Okay, so we will do practically in our id. So we will go to our id. हम लोग अपने आईडी पर आ गए. सो अभी देख फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग पास एक फंक्शन है, इसको मैं नाम देता हूँ ऐड. ओके, इसका वर्क हो कि हम लोग पास ये प्रिंट करेगा टू नंबर का सम. ओके, 3 प्लस. ओके, 3 प्लस 2 का हम लोग पास हम प्रिंट करेगा. ओके ओके, इसके बाद फिर हम लोग इसको ना एक हम लोग पास डेकोरेटर फंक्शन होगा. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल. ओके ओके, इसको मैंने नाम दिया है एडिशन. एडिशन. ओके, एडिशन. ओके, इसको मैंने नाम दिया एडिशन. ओके, इसको मैंने नाम दिया एडिशन. तो फिर मैं इस ओके हम लोग पास जो ये फंक्शन है. ओके, इसके अंदर हम लोग एडिशन करेंगे. ओके, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी का. सो फिर मैं एट द राइट. ओके, एट द राइट के बाद फिर मैं यही. ओके, जो मैंने फंक्शन बनाया तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी. ओके, सेम नेम, कंट्रोल वी पेस्ट. ओके, मैंने एक डेकोरेटर बना लिया. ओके, मैंने इस फंक्शन को डेकोरेटर में स्टोर कर लिया. तो हम लोग पास डेकोरेटर फंक्शन ये है. ओके ओके, मैंने एक डेकोरेटर फंक्शन अभी ये बना रहा हूँ. ओके, तो ओके एक्स्ट्रा. ओके, फॉर एग्जांपल मैंने इस फंक्शन के अंदर एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी ऐड करना है, तो मैं अनदर फंक्शन बनाता हूँ जिससे मैं नाम देता हूँ एक्स्ट्रा अंडरस्कोर फंक्शनलिटी. ओके, सो मैंने एक और फंक्शन में जिसको मैं नाम दिया एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी. इसके अंदर जो मैं फंक्शनल एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी ऐड करूँगा तो इसके अंदर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी. सो मैं इसको भी नाम देता हूँ इस फंक्शन को. इस डेकोरेटर के अंदर मैं नाम देता हूँ एड 1. ओके, मैंने नाम दिया एड 1. ओके, अभी मैं इसके अंदर टू दे. ओके, एक मैं फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट करता हूँ तो हम लोग पास से स्टार्ट होगा. स्टार्टिंग. ओके, स्टार्टिंग. मैं नाम देता हूँ स्टार्टिंग. ओके, फिर मैं इसको कॉल करूँगा. मैंने क्यों किस तरह मैं कॉल करता हूँ? बाय दिस बिकॉज ऑफ आई गिव द नेम here. Okay, add 1, I gave the name here. Control C, I will copy and I will paste here and I will call it. Okay, then I'll print ending. Okay, ending. बाद फिर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा ऐड. ओके, सो मैंने कॉल कर लिया. सॉरी, मैंने इधर एक और मैंने इसको रिटर्न नहीं किया. ओके, मैं इस फंक्शन का भी रिटर्न करूँगा एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी.
ओके, मैं फंक्शन को रिटर्न कर दूंगा एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी। ओके, मैं कॉल नहीं करना चाहता, मैं रिटर्न करना चाहता हूँ। ओके, सो अभी मैं रन करता हूँ पाइथन फाइल को। okay, so you can see that starting, okay, from starting, okay, starting, okay, and okay, 3 plus 2 5, okay, ending like this, okay, like this. Okay, I add this extra to functionality, this starting as well as this ending I added to functionality. Okay, this extra functionality I added. Okay, this extra functionality I added. So that is known as decorator. Decorator we use when we want to add extra information in a function without changing its original code. Okay, that is known as decorator. With decorator are used to add extra information in another function without changing its content. Okay, or function. ओके, तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि डेकोरेटर इज अ फंक्शन दैट ऐड एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी टू अनदर फंक्शन विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिजिनल कोड। ओके, हम लोगों ने समझ लिया। फिर उसके बाद हम बताए कि वाई वाई वी यूज़ डेकोरेटर, हम लोग डेकोरेटर को क्यों इस्तेमाल करते हैं। अवॉइड रिपीटेड, जब हम लोग रिपीटेड कोड को अवॉइड करते हैं। लॉगिन, ऑथेंटिकेशन, टाइमिंग। ओके, टाइमिंग। ओके, मैं फिर समझाऊंगा हम लोग टाइमिंग की किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं डेकोरेटर को। ओके, लॉगिंग सिस्टम पर ऑथेंटिक, टाइमिंग एक्सेट्रा इस चीज़ों से। ओके, कीप कोड क्लीन, हम लोग पास कोड क्लीन होता है। ओके, सो मैं भी समझ एक एप्लीकेशन है इसमें टाइमिंग में समझाता हूँ। ओके, ओके, टाइमिंग हम लोग पास हम लोग किस तरह यूज़ करते हैं डेकोरेटर को टाइमिंग के लिए। ओके, सो अगेन मैं आईडी पर जाता हूँ, सो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। ओके, मैंने इसको कमेंट आउट कर लिया। आफ्टर द कमेंटिंग आउट, ओके, सो आई विल राइट हियर। ओके, decorate. Okay, use of decorator, use of decorator. Okay, use of decorator. Okay, I wrote here use of decorator. ओके, फॉर टाइम। ओके, वी विल यूज़ फॉर टाइम, हम लोग टाइम के लिए यूज़ करेंगे। हम लोग किस तरह डेकोरेटर को यूज़ कर सकते हैं, डेकोरेटर फंक्शन को। ओके, फंक्शन, लेट्स राइट हियर फंक्शन फॉर टाइम, decorator function for time. Okay, how we can use it in time, for time. So okay, like for example we'll make a function. Here we have measuring. Okay, so we'll write, okay, uh, work. Okay, work. Okay, I have a function that name is work. Here we will, okay, first, okay, we will, okay, using the time. Okay, first we will import the time. Here we will import it, import time as t. So I imported this library, time library, and then I'm saying that t dot sleep by. Okay, like this is a function which is used. Okay, this is a, okay, this is the method which is used, okay, for pass. Okay, now I want to pass like 5 seconds. Okay, so it will be passed. Okay, so I will, okay, I will write here, mention here, sleep function. So it is a method, sleep method is used for pass. Okay, when we talk of pass, so we will use that. This is a sleep function. Then I'll print hello everyone, hello everyone. Okay, after the 5 second pass, then I will print this hello everyone. Okay, so now this, so okay, so I will make another function that will be the decorator function. So I will give the name, okay, working. Okay, I will give the name to it, working. Okay, and I will give to this function, okay, to this function, in that I will give, okay, works. Okay, then it will be not the similar name. Okay, so then I'll say that it is word decorator. Okay, so
We will apply decorator here, so I will give a name working. Okay, similar name where we get in decorator function, we will give a similar. Okay, working. Okay, so like this, and then another function df. I will also write here extra. Okay, time measuring. Okay, time time underscore measuring. Okay, time measuring. Okay, there's another function that name is time measuring. Okay, so I will say that initial underscore time equal to uh, okay, t dot time. Okay, this is another method which give the current time, this time. Okay, method. Okay, so then I will call this. Okay, call this function, so I give here now name work. मैंने वर्क का नाम दिया वर्क्स, so मैंने इसको भी कॉल कर दिया. After the calling this work function, then final time equal to t dot time. So then we will okay subtract it. Okay, initial time subtract, sorry, final time. We always the final is more, final time subtract initial time. Okay, so like this we will print it. Okay, after then we'll return this function, return using return statement, return time measuring. Okay, time measuring. So then we'll call this function. Okay, work. Okay, so when I will run it, run Python file, and now it will be pass. Okay, taking 5-second pass. Okay, after a 5-second pass. Okay, so it run. Okay, hello everyone, in how many time. Okay, times I will give here time measuring. Okay, in f string. Okay, okay, formatting string I used. Okay, here I will write time measuring. Okay, time measuring. Okay, time measuring. So now I will run again it, and it will be look like 3. Okay, now it will take 5-second pass. Okay, hello everyone, time measuring. Okay, this 5. Okay, 5. Okay, it will round, when we round it, it will be 5.01. Okay, so it take less time. Okay, so this, okay, here we can use when you want time measuring. Okay, so like this. Okay, in logging time we can also use when we want. Okay, someone log, then we'll say that okay, print. Okay, that happened. Okay, when it didn't. Okay, like the another function will make add more functionality, and we'll say that that is not okay, unsuccessfully you log in. Okay, so now it's the benefit where we, okay, benefit of this. Okay, benefits, code reuse. Okay, we can use our code infinite time because of it is also definition of function. Okay, function is used to increase the reusability of code, linear code. Okay, when you write when we use the decorator function, then okay, then we, okay, then the code will be clean and easy maintenance. Okay, the maintenance will be also it's okay. For today that is enough. Inshallah we will meet another new excited video.